children, today let's start with chapter number 2, role of government in health. So in this chapter, we'll study about the health is wealth, right? So health is an essential aspect of everyone's life. It refers to the state of being free from illness and injuries. So health is just not about avoiding disease. It also affects the factors like pollution, malnutrition and mental stress. So in country like India, if we talk about, we have a significant portion of the population that lives in poverty. Lack of access of nutrition और उनको clean drinking water भी available नहीं होगा. So government play a crucial role in ensuring the health of the citizen. To provide adequate healthcare, government must establish various health facilities जिसमें आपके health centers, hospitals, laboratories और medical test और blood banks होते हैं. ये जो facility है, they required qualified medical professions such as doctor, nurses as well as steady supply of medicines and medical equipment. So India faces the persistent health challenges, notably that is high prevalence of tuberculosis, malaria. It claims that lives of 5 lakh people annually, while 2 million cases जो हैं आपके मलेरिया के वो रिपोर्ट होते हैं हर ईयर एवरी ईयर, एंड एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज स्टिल लिमिटेड इन मैनी, जिससे क्या होता है आपको डिजीज होते हैं लाइक डायरिया and gastroenteritis. Despite being the world's 4th largest producer of medicines, India struggles with malnutrition and shortage of essential medicines. इससे क्या होता है आपका unfortunate death हो जाती है एक बच्चे की. So Indian boasts of substantial number of doctors, hospitals and clinics and widespread of government funded healthcare facilities that is spanning in the entire country. So advancement due to rapid development in science technology, हम देख रहे थे जो field of medical sciences में बहुत सारे क्या हो रहे हैं development हो रहे हैं. So government vision of providing adequate healthcare to all citizens, it remains a distinct goal, and the vast population of India means that every efforts to improve healthcare services is a small step. वो क्या एक छोटा step है हमारे. Types of health services, we have public health services that encompass the entire chain of government, right? So health clinics and hospitals, these services are available in both rural and urban area. और ये क्या ऑफर करता है? ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स as well as specialized care. So what we can say, while major cities have multi-specialist hospitals and public hospitals too, because they are funded by the government and taxes are paid by the public. गवर्नमेंट फंडेड तो है, लेकिन वो किससे चल रहा है? जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या कर रहे हैं, वो चल रहे हैं. Right, therefore government plays a crucial role in preventing the spread of disease, जैसे आपकी मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, चिकनगुनिया, डायरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस. आपको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इट इज एन इम्पेरेटिव टू इन्वॉल्व एंड एजुकेट पब्लिक अबाउट डिजीज प्रिवेंशन, उनका ट्रीटमेंट. राइट, नेक्स्ट इज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. So if we talk about private health services, Indian also boasts a wide array of private healthcare services. Numerous doctors operate प्राइवेट क्लिनिक स्पेशली इन अर्बन एरिया. जो स्पेशलाइज नर्सिंग होम्स होते हैं वो आपके वहां पे आप देखोगे वहां पे आपको एडवांस फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है. लाइक वी हैव एक्सरे, एमआरआई, बोन डेंसिटी टेस्ट. दीज ऑल आर द टेस्ट्स दैट गो देयर. सो इन रूरल एरियाज प्राइवेट डॉक्टर्स दे ऑफ्टन practice as registered medical practitioners, and unlike public health services, private healthcare is relatively expensive, requiring individual to bear cost of treatment, test and medications. So we can say that healthcare and equality, it is educate healthcare available to all. So in India healthcare services जो है वो crucial role play करते हैं हमारी लाइफ में. They ensure that they receive medical care we need when we are sick or injured. So there is a big difference, बहुत बड़ा difference यहाँ देखने को मिलता है आपको. And these hospitals are in the business to make profit. They have more modern equipments but they can be quite expensive. देखो मॉडर्न इक्विपमेंट्स तो हैं लेकिन उसके साथ साथ क्या है वो एक्सपेंसिव भी है. फॉर एग्जांपल लाइक अपोलो हॉस्पिटल, ये एक वेल नोन प्राइवेट हॉस्पिटल है. गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स ऑफ्टन लाइक द रिसोर्स दैट प्राइवेट हॉस्पिटल. इट टेस्ट एंड मेडिसिन्स आर यूजुअली अवेलेबल ओनली विद इन द हॉस्पिटल और स्पेसिफाइड प्लेसेस. सो अनफॉर्चुनेटली ओनली अबाउट 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कैन अफोर्ड expensive medical treatment due to poverty and the difficulties. Now possible alternatives for health. So it is clear that state of healthcare of our country needs improvement. Providing good healthcare, basic necessities and improving living condition. ये किसकी responsibility है? Government की. So let's took an examples. First is the Kerala experience. मैं आपको केरला वाला experience बताती हूँ. So in 1996, government of Kerala made a significant change.
एंड व्हाट दे एलोकेट कि जो 40% ऑफ द स्टेट बजट है टू पंचायत, ठीक है, वो किसका होगा, पंचायत होगा, जिससे हम वेरियस इश्यूज जैसे वाटर सप्लाई का हो गया, फूड का हो गया, वुमेन्स डेवलपमेंट का हो गया, उनको हम देख सकते हैं। स्कूल्स, आंगनबाड़ी and health centers were all part of the specific problem, while health centers have improved. Challenges से अगर जो मेडिसिन के शॉर्टेज होती है, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल्स बेड्स होते हैं, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर होती है, तो वो सब क्या होगी, हम फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोस्टा रिका अप्रोच। सो कोस्टा रिका जो है वो आपका सेंट्रल अमेरिका में है। इट इज वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द रीजन। वन interesting thing is about Costa Rica is that they made a choice not to have a military, so they could allocate more resources. वो ज़्यादा resources को क्या कर सकते हैं, allocate कर सकते हैं, right? They include safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. Health education is considered very important at all the stages of development, right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in next class. Thank you.